अब आते या हैं रिजवान की कप्तानी की तरफ, जो जो कि आई थिंक ये मैं हमारे जो लॉन्ग टर्म लिसनर्स हैं वो जानते होंगे। आई थिंक बट्टा फास्ट हैज बीन प्रो रिजवान एज कैप्टन इन अ वे 100%। दैट आई फील वी हैव नॉट सीन, एंड हमने पहले भी इस पे बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 10 लोगों से मैंने पूछा और 10 लोगों ने 10 जवाब दिए कि रिजवान को क्यों नहीं होना चाहिए था क्यों कप्तान। नहीं होना चाहिए? और हाँ, और हमने पहले भी इस पे गुफ्तगू की है, दिस क्लियरली रेसिज्म उनमें एट से कोई से प्ले। कन्विंसिंग जवाब नहीं हुए हैं, बाय द वे। कोई भी Yes, yes, कन्विंसिंग जवाब नहीं है। never. I think कि मतलब people, his personality rubs people off the wrong way, and there's some racism involved in there, and Yeah, that I mean, seems to be Imran about Khan's it. personality rubbed a lot of people off the wrong way हाँ also. हाँ, मैं मतलब वही कह रहा हूँ कि having heard हाँ, these very weak answers, like the only thing I can take away is this is not a real reason. It just seems like you don't like how he is. And I yeah, can get that. I'm sure if I had to work with Rizwan, it would be challenging. He'd get on my nerves, but I think the guy again has a good. He's been really good as a cricketing like kind of person on the field for a while. और कि वही था कि पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई बहुत रेडिकल चेंज नहीं किया. Obviously it helped they won the toss and the pitches and whatever, but वही जैसे कि रऊफ के पावर प्ले वाली हम बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर आप थोड़ा सा मुख्तलिफ करना शुरू कर दें तो वो हो जाएगा. एंड आई फील विद रिजवान like might not be the perfect captain, मगर पाकिस्तान में जो options हैं उसमें रिजवान की कप्तानी gives the team the highest ceiling. हाँ। यार देखो, विकेट कीपर्स बहुत सालों से उन्हें कप्तान नहीं बनाया था, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई थिंक Hmm. विकेट कीपर्स का जो पर्सपेक्टिव होता है गेम का, जो पिच का पर्सपेक्टिव होता है, जहां से वो देखते हैं गेम, आई थिंक they're best placed to be the guys who are kind of, angles वही सेट करते हैं फील्ड के. They see what the pitch is doing, they see what the batter is doing. They're great that way, and all those things are really apparent in Rizwan. Like, he reads the game, he sees the game happening, and he goes with it. He did little things really well, जो basic चीजें जो पाकिस्तान के पिछले इतने तो कप्तान नहीं रहे हैं पाकिस्तान के व्हाइट बॉल में, मगर जो जो कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, नाम ही ले लेते हैं, बाबर हो गया, शाहीन हो गया. Shine एक सीरीज के साथ, I don't want to really include him. So It's really basically, Babar. we're basically about Babar here, and छोटी छोटी चीजें जो वो आप खुद बैठे हुए, we are nobody to question a captain with his decisions on the field, because he knows exactly, he knows best what's going on there. But there was so many times with Babar you would question his decision कि यार इसने ये क्यों करा, इस तरह से क्यों करा, why would he bring this basic stuff. Like रिजवान ने पहली गेम में, हालांकि पाकिस्तान हारा, but he chose not to stop bowling his fast bowlers. वो इस रिमोट कंट्रोल पे नहीं था कि अच्छा इसके मैं 3 ओवर यहां से करा लूंगा और फिर मैं इसे ले आऊंगा, और फिर यू नो अगर अगर मैं बाबर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन कितने और एंड ही इज नॉट अलोन इन दिस, मगर कितने Yeah. पाकिस्तानी कैप्टन होते जो 10 ओवर के बाद 11वां ओवर स्पिनर को दे देते, क्योंकि स्पिनर को अपनी टीम में रखा हुआ है, और चलो यार 11वां ओवर एक तो स्पिनर को देना होगा ना, 2-3 स्पिनर को देने होंगे पावर प्ले के बाद. कितने करते, नॉट जस्ट बाबर, कितने करते कि फौरन से बस झट से 2 विकेट लिए, थोड़े से रन चले गए. रिजवान वाज लाइक नो या यार, इसके अभी निकाल दो, इसके अभी निकाल दो ताकि डेथ में किसी और को देंगे. लाइक एंड इट्स जस्ट लाइक नहीं भाई, आप 30 ओवर में मैच खत्म कर सकते हो. so Rizwan throughout the series, and he bowled, he batted first. They, like, Pakistan batted first throughout the series. Did they? No, sorry, they No, didn't. What am I saying? they Sorry. chased 2 matches. They lost the only Yeah, time they yeah, batted. yeah, sorry, I'm getting that wrong. But in every instance, he went out thinking, almost thinking कि यार ये 40 ओवर में खत्म करना है मुझे. मेरे जो 4 बेस्ट बॉलर्स हैं ना, फास्ट बॉलर्स, बस मुझे इनकी इनिंग्स 40 ओवर में खत्म कर देनी है. सो आई एम गोना अटैक, एंड ही डिड अटैक. उसके क्रेजी फील्ड भी थे एक दो. आज मैं हैरान हुआ, तस्वीर मैंने देखी, आई हैडंट सीन इट इन द मैच, तो कोई 4-5 स्लिप खड़ी हुई थी. ऑस्ट्रेलिया वो 20 for 1 और 4 स्लिपें खड़ी हुई थी. और यार ये क्या सीन चल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा. It's also like overt examples of attacking cricket, which don't always work. Lekin it was just good to see him play, like, just lead in a very sensible way. कि यार फास्ट बॉलर्स अभी चढ़े हुए हैं इनके ऊपर, इन्हीं से कराओ. Let's not just resort to spin or a different option just because हमारे पास वो bowler है. नहीं, you've got your foot on their neck, press down on it now. Press down and go harder, because the the benefits of taking that risk and going harder far outweigh the benefits of not taking that and playing slightly safer and like a longer game. The benefits are there.
और दोनों बार हुआ है वो तो एंड his touch wood touch everything I can find Allah का लाख शुक्र है उसकी keeping was not affected. I think he dropped one catch, but he took a record equaling 6 catches in the second ODI और एक जो उसने छोड़ा था he would have been outright leader in the most catches. So his keeping was not affected. His batting, he batted pretty well. पहली गेम में I think 44 बनाए थे उसने. He was a top scorer. और फिर आखिरी गेम में he finished not out to finish off the chase. Looked pretty good. And हम कब से कह रहे हैं कि यार रिजवान को आप क्यों नहीं बना रहे कैप्टन? So for all those people who were backing Rizwan to be captain, I think they're now like after this series sitting back and saying, "Yaar, we told you so. Like, why didn't you? You've seen him at Multan Sultans. Whatever his issues are, jo bhi hai wo, yaar, he's a successful captain, and it hasn't affected his performance as a player. That he has kept top notch throughout, which is मैं हमेशा कहता हूँ मैं पाकिस्तान क्रिकेट में more than any other, I think, cricket playing country in the world, जहां पे आपको थोड़ी सी स्लैक मिल जाती है इन पाकिस्तान क्रिकेट, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज अ कैप्टन, तो आपकी जगह बहुत जल्दी, आपकी जमीन आपके पैरों के नीचे से बहुत जल्दी फिसल जाएगी ना. इट विल बी गॉन. यू हैव टू परफॉर्म. दैट्स लाइक द नंबर वन थिंग. मिसबा रन्स बनाता था, इमरान all time great player, Wasim kept his captaincy later on because he was performing. You have to score runs. So Rizwan's performances, he's doing that, and he captained them to like a historic win in Australia. I saw nothing in what he did in the field as a captain that takes away from our belief शुरू से कि यार आप क्यों नहीं बना रहे हो इस बंदे को कैप्टन. बिल्कुल, आई थिंक कि एक और चीज़ जो सुनने में आती थी कि रिज़वान का मुल्तान सुल्तान के साथ जो है बड़े मैचेस में वो नेगेटिव हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है ये वो। और मुल्तान सुल्तान ने काफ़ी फाइनल भी हारे हुए, बट अगेन उस सवाल पे भी मतलब उस पॉइंट पे भी मेरे दिमाग में सवाल उठता था कि भाई फाइनल तक तो आ रहा है ना मतलब कि दैट्स एंड आई फील कि एक चीज़ इनफैक्ट people can disagree as much, but like if franchise cricket, खासतौर पे अगर लीग थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी स्टेबल हो, पैसे ज़्यादा हो, जिसमें कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाती है, वहां पे आई फील एक्चुअली आपके पास यू डिड इट्स अ लॉट मोर कॉर्पोरेटाइज्ड. इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है उसमें डिपेंड्स ऑन बोर्ड टू बोर्ड, और पाकिस्तान वाली क्रिकेट जो है वो काफी स्टार्टअप माहौल है तो I think that might end up suiting Rizwan's temperament better than the franchise cricket. Again, this is speculative, मगर ये एक फर्क जरूर है, और वही बात जो इस बात की है कि it again goes to show that there was never, at least in our heads, कोई अच्छी आज तक हमने वजह नहीं सुनी कि रिजवान को पहले क्यों नहीं कप्तान बनाया गया था. ऑब्वियसली ठीक है, जब बाबर चल रहा था वगैरह ये वो, एंड आई थिंक लास्ट टाइम वी डिड डिस्कस के ऑल्सो उसके अपने करियर का थोड़ा रिवाइवल हाल ही में हुआ. ही हैड अ बैड पैच फॉर क्वाइट अ वाइल, तो वो भी वजह थी. बट स्टिल ओवर द लास्ट मे बी ईयर वेयर शाहीन एंड शान हैव बीन मेड कैप्टन्स, आई थिंक उस का एटलीस्ट उतना ही हक था, इफ नॉट मोर. एंड आई थिंक कि ये भी अहम है याद रखना कि जो कुछ भी था, आपने 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीत लिए, a historic win or whatever, like it's just really a bilateral series. But what was really good to see, exactly what you just said, कि भाई साइम और अब्दुल्ला शफीक रन बना रहे हैं. फास्ट बॉलर्स, चारों फास्ट बॉलर्स, जिनमें से 2 का इतना ट्रॉमेटाइजिंग टेस्ट गुजरा है, एक इतनी बड़ी बुरी इंजरी से, और नॉट इंजरी सॉरी रीमॉडलिंग एक्शन से वापस आ रहा है, एक और इस साथ जिसको हर वक्त वैसी गाली गलौज पड़ रही होती है. ऑल 4 of them just bowling beautifully, finding their kind of rhythm and pace over there. वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था. और कि मतलब एक I think we discussed it after the England series as well. कि a lot of times like जो पाकिस्तान टीम की on paper strengths हैं, like they tend to vary quite wildly, and so much of that can be like brought into a little bit more control कि आपके थोड़े plans better हो, थोड़ी stability हो. तो hopefully with this kind of victory that Rizwan has had, कि यहाँ पे आप at least Champions Trophy तक तो, या वर्ल्ड कप, या जो कुछ भी यू नो होराइजन में आप देखना चाह रहे हो, लाइक थोड़े अरसे के लिए तो इस सेटअप के साथ चलते रहें.